Hello and welcome to Ecoholics. In this video, we will see what are the important areas in order to qualify the RBI Grade B DEPR exam. अब आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है वो ऑलमोस्ट एक हफ्ता रह गया है. अब इस 1 वीक में हम क्या कर सकते हैं? जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि इस एग्जामिनेशन में 4 सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो ये जो फेस 1 एग्ज़ाम है उसका सेक्शन 1 जो रहेगा उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से रहेंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स मिक्स. इट मीन्स मेजॉरिटी क्वेश्चन विल बी फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स एंड देन few question will be linked with stats and econometrics. And the fourth is macroeconomics. So these are the 4 important major subjects. Like for example, if they are asking 62 questions, out of 62 questions, you'll find more than 50 questions from these 4 subjects: micro, statistics, econometrics, and macroeconomics. Apart from that, what is important is to keep in mind कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं? इसमें आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पर न्यूमेरिकल भी इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. तो न्यूमेरिकल के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स आएगा. न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेशन होगी वो छोटी छोटी होगी, बट जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद ही आपको वो क्वेश्चन बनेगा. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जब हम आरबीआई का फेस 1 एग्जामिनेशन दें डीईपीआर का, तो कोशिश करें ये 4 एरियाज से. आपने अगर मेरा लाइव सेशन देखा हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने एक डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, है ना. वो मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल है इकोहॉलिक्स की. मैं यहाँ पे अलग से नहीं बताने वाला हूँ. ये सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो है आपको क्या करना है. तो जब हम एग्ज़ाम देंगे, पहली चीज़ है इसमें आपको टाइम बहुत कम पड़ेगा. तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है. दूसरा जो इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको ध्यान रखनी है इस एग्जामिनेशन में इज़ दैट यू हैव टू मैनेज द क्वेश्चंस एंड द सेक्शंस. क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग डिफरेंट है. जब नेगेटिव मार्किंग डिफरेंट होगी तो उसके जो क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन है वो भी डिफरेंट होगा. तो जब भी हम बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो बहुत श्योर हो तभी अटेम्प्ट करें, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग बहुत डिफरेंट है हर क्वेश्चन के लिए. तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप इस एग्जामिनेशन को दो, एग्जामिनेशन सेल में जो हॉल आपको मिलेगा उसमें आप 15-20 मिनट पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है. ट्राई टू रीच 15-20 मिनट्स बिफोर. Why it is important? Because it will calm down your nerves. Fourth point, keep the use of your rough sheet very well. Why important? Because rough sheet पे आप छोटा छोटा डायग्राम बना सकते हो. जब वो आपसे रिलेशनशिप क्वेश्चन पूछेंगे, like what will happen when Fed will increase the interest rate, what will be the impact on rupee? It will depreciate or appreciate. And if it will depreciate, what RBI will do in order to control the depreciation of rupee? So these kind of conceptual questions they will ask. And in order to not get confused, what you can do, use the rough sheet and make certain diagrams like relationship charts. Fed interest going up, what will happen to rupee, small arrows. And that will minimize your negative marking because people generally do make these kind of mistakes. If you feel you are struggling somewhere, you can always connect on call with me. Absolutely free anytime. You just call on the number given in the description or on the screen as well. You can connect, ask your doubts, need mentorship before the exam. I'm always there for you. Okay. One important thing before the exam, 1 week, what you can do is mental revision. Now, how to do mental revision? Read something, close your eyes and try to revise. Because your mind will go into the examination hall, not your book, not your copy, not any of the notes, Google, etc. So, irrespective of where it is written, if it is not there, it's difficult to implement. Always remember that phase 1 marks are the part of the merit. So, try to score as much as possible. It's qualifying as well as the part of the merit. And phase 1 is one of the most difficult part of this examination cycle. Phase 2 is relatively easy, so cutoff goes high. Here cutoff is around 55 to 60%. Okay, so I hope you got something in this video. Still need any help, you can connect with me on call as well as on email.
If you need any other help, you can connect to our team as well. There are academic counselors. They will help you. So all the best for your final day. See you after the examination. Thank you so much.